Good morning, students. Today's class is about our preparation of cost sheet. उससे पहले हम लोग थोड़ा सा क्या-क्या पढ़े थे उसको डिस्कशन कर लेते हैं, फिर कॉस्ट शीट को आते हैं, क्योंकि the types of cost is totally related with cost sheet. पहले हम लोग क्या पढ़े थे? First one is what do you mean by financial accounting? What are the limitations of financial accounting so that cost accounting comes to play? What are the main scope of cost accounting? Three scopes of cost accounting. One is cost ascertainment, cost control, and cost reduction. Is that clear? ये हमारा तीन चीज था. Next one सबसे important चीज होता है on the basis of element. The cost is हम लोग क्या पढ़े थे? There are so many types of cost is there. On the basis of element, on the basis of behavior, on the basis of controllable, on the basis of managerial decision. So many types of cost is there. So on the basis of element, the cost is divided into three types. So cost is divided into three types. First one is material cost. Second one is labor cost. Third one is expenses cost. समझ में आ रहा है? So, when there is a material cost, it must be, or whether it is a direct material or it is an indirect material. You can ask me, what do you mean by direct material? What do you mean by indirect material? Let's take an example. When there is two product or two production department, P1 and P2. समझ में आ रहा है? Two factories or two production department is there. One is P1, second one is P2. Let two inputs is there, A and B. A is exclusively used for production department P1, but B is used for P1 and P2. Listen carefully. There are two types of inputs, A and B. The A is exclusively used for production number 1 and the B is used for production number 1 and production number 2. So I can say the A total cost of A or total material cost of A must be charged to only P1 and the cost of B must be charged to P1 and P2. So here this A cost is known as direct material cost, B is known as indirect material cost. I am not saying that always it is indirect material cost, but when the product is exclusively used for a single production department, then it is known as direct material cost because this is directly contributed to P1. Is that clear? So in case of direct material, the cost center is in single unit. When it is apportioned between two or more production department or two or more department, then it is known as indirect material. Likewise, labor is also two types. One is direct, second one is indirect. Likewise, expenses also two types. One is direct, second one is indirect. Let's same example P1 and P2. There are two employees A and B. A is same, बस सोच लो to labor A, this one labor B. Labor B is providing services to P1 and P2, but labor A is only exclusively used for production number 1. So the labor cost of A is direct labor for P1 and the labor cost B is indirect for P1 and P2. It means that when the cost is directly charged to one specific cost center, when the cost is, ये जो cost था B का,
डायरेक्टली एक्सक्लूसिवली चार्ज, सॉरी ए का कॉस्ट जो था डायरेक्टली एक्सक्लूसिवली चार्ज फॉर P1, so that it is known as direct labor cost. When it is exclusively not charging for P1, segregation between P1 and P2 is done, then it is known as indirect labor. What I mean? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Likewise, when expenses is exclusively used for a single production department or single department is known as direct expenses. When it is not charged for single and segregation of these known, then it is known as expenses of indirect expenses. Is that clear? Likewise, when the combinations of direct material, direct labor, direct expenses is there, it is commonly known as prime cost. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Direct material, direct labor, direct expenses. Combinedly, these three is known as prime cost. Likewise, indirect material, indirect labor, and indirect expenses, commonly known as overheads. Is that clear? Again, overhead is divided into three types. The first point is the overhead is divided into three types. One is factory overhead. Second one is office and administration overhead. Last one is selling and distribution overhead. You can ask me, sir, what do you mean by factory overhead? What do you mean by office and administrative overhead? And what do you mean by selling overhead? All these clear things will be discussed on next class. But I am telling somehow, factory overhead means those expenses are related to factory is known as factory overhead. When there is an expenses related to office and administration is known as office and administration costs. Those is known for selling and distribution purpose will known as selling and distribution costs. Selling and distribution overhead. समझ में आ रहा है? तो ये क्या बोल रहा है? The total cost is divided into three types. One is material, second one is labor, third one is expenses. The material is divided into two types. One is direct, second one is indirect. Labor is divided into two types. One is direct, second one is indirect. Expenses is divided into two types. One is direct, second one is indirect. Is that clear? Again, direct material plus direct labor plus direct expenses combined known as prime cost. Indirect material plus indirect labor plus indirect expenses commonly known as overhead. So, the combinations of all indirect expenses is known as overhead. The combination of or the sum of all direct costs is known as prime cost. So, the overhead is again divided into three types. One is factory overhead, second one is office and administrative overhead, point number last is selling and distribution overhead. So the overhead is divided into three types. After that, we will discuss what do you mean by cost. Okay? Listen. Before preparation of cost sheet, we have to know something about cost sheet. First one, cost sheet. What is cost sheet? First is, it is a statement of total cost or break of cost of a production or प्रोडक्ट. प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? सोच लो, एक फैक्ट्री है,
इसमें से 1000 यूनिट का आउटपुट निकल रहा है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? This factory is having an output of 1000 unit for having total cost of 1 lakh. This one is given by cost sheet. Otherwise per unit product का मतलब क्या है रे? टोटल मेरा कितना खर्चा हुआ 1 लाख डिवाइडेड बाय कितना यूनिट के लिए 1 लाख खर्चा हुआ 1000 यूनिट के लिए, so 1 lakh divided by 1000, so per rupees material cost is rupees 100, so this one will be divided or declared by cost sheet, this one also declared by cost sheet. Likewise it is a statement of total cost. ये क्या कर रहा है? एक चीज का टोटल कॉस्ट स्टेटमेंट बना रहा है। और ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट, ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या है? मैंने जो टोटल कॉस्ट 100 बोल दिया, मटेरियल कितना है, लेबर कितना है, एक्सपेंसेस कितना है, फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कितना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, फैक्ट्री में फिर कौन सा एक्सपेंसेस आ रहा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा आ रहा है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में कौन सा आ रहा है, ये पूरा चीज मुझे क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई कॉल्ड इट इज एन ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट। मुझे क्या करना पड़ेगा? टोटल कॉस्ट को एकदम ब्रेकअप लेना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द कॉस्ट शीट इज ऑलवेज इन वर्टिकल फॉर्म। वर्टिकल फॉर्म का मतलब क्या होता है? Cost sheet is always in vertical form. Vertical का मतलब क्या है कि हमको क्या करना पड़ेगा? ऐसे प्रिपरेशन करना पड़ेगा। हम लोग ऐसे प्रिपरेशन करने से नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? वर्टिकल मतलब मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, टोटल आ गया, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, all these things. After that another thing will become. समझ में आ रहा है? So the cost should not be segregated in horizontal manner. The cost must be segregated in vertical form. So आप लोग जब cost sheet prepare कर रहे हो, so तुम्हें एक छोटा सा क्वेश्चन दिया, find out prime cost of income, prime cost of in product. Material is rupees 100, labor is rupees 50, expenses is rupees 30. So आप लोग क्या करोगे? Cost equals to material plus labor plus expenses, 100 plus 50 plus 30 equals to 180. This one is wrong. We have to prepare like that. Material 100, labor 50, expenses 30, total हो गया 180. हम लोग को क्या करना पड़ेगा? Form must be like that in vertical form. The form should not be in horizontal form. समझ में आ रहा है? Like in this case, we have to prepare in vertical form, not a single form must be derived. समझ में आ रहा है? Clear? अभी हम लोग क्या करते हैं? एकदम शुरू से अच्छे से कॉस्ट शीट बनाते हैं। तुम मेरे साथ ही बना के चलो, फिर हम लोग क्या करेंगे? फटाफट कॉस्ट शीट खत्म करते हैं। ओके। First one, okay. First is opening stock of raw material. Okay, add purchase and direct expenses
related to purchase including carries inward समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें से क्या ऐड करो, परचेज एंड एनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज और कैरीज इनवर्ड मस्ट बी मेंशन्ड इन दैट प्लेस. ओके, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये क्या करो, ऐड कर दो, माइनस करो, करने से मेरा जो आएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. इज दैट ओके? When opening stock of raw material, add purchase, add direct expenses, और मैं बोल सकता हूँ any direct expenses related to purchase, whether it is in commission, whether it is in anything, whether it is in carriage, whether it is in tax, whether it is in import duty, whether it is in excise duty, anything is there, we have to add on that. समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में आप लोगों को कभी कभी क्या करेगा, इधर दे देगा कि एक कमीशन इज गिवन फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ ₹100. आपको डायरेक्टली 1000 क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं. एनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर से बोल रहा हूं, एनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज, परचेज के हिसाब से जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है सबको मुझे क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करवाना पड़ेगा. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? So this one is raw material consumed. फिर मैं क्या करूं, डायरेक्ट लेबर. ओके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को मिला दो. तीनों को मिला देने से जो आएगा इसको हम क्या बोलेंगे, okay, when generally three things are done, one is raw material consumed, second one is direct labor, third one is direct expenses. The raw material consumed can be calculated by the above formula, that is opening stock of raw material, add purchase, add any direct expenses related to purchase, less closing stock. समझ में आ रहा है? ये तीनों को मिलाने से मेरा क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट. अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, add फैक्ट्री ओवरहेड लेस स्क्रैप. जनरली क्वेश्चन में स्क्रैप नहीं होता है, अगर स्क्रैप नहीं है तो इधर मत डालो, अगर स्क्रैप है तो इधर स्क्रैप डालो. क्या आ जाएगा, टोटल, इसको हम बोलते हैं ग्रॉस फैक्ट्री और वर्क्स और मैन्युफैक्चरिंग. समझ में आ रहा है? तीन नहीं, हम क्या बोल सकते हैं, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट और ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट और ग्रॉस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. समझ में आ रहा है? अभी फिलहाल हमको क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए we have to adjust work in progress. So before writing work in progress, you have to know what is work in progress. सोच लो 31st मार्च में मेरा अकाउंट्स क्लोज हो रहा है और स्टेटमेंट क्लोज हो रहा है, आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा. क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस शीट का क्रेडिट साइड में, ब्रांड्स का एसेट साइड में लिखना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? बैलेंस शीट का क्रेडिट साइड में होता है, एसेट साइड होता है, एसेट साइड में लिखना पड़ेगा. सो इसीलिए क्या बोल रहा है कि अभी सोच लो मेरा तीन चीजें 500 का रॉ मटेरियल है, और जो 200 का रॉ मटेरियल मेरा बीच में, मतलब अभी उनका प्रोसेसिंग चल रहा है,
वो फिलहाल अभी तक still now it is not converted into finished goods. It will take some more times, that is 10 to 20 days for converting into finished goods. उसको 15 to 20 days लगेगा किसके लिए? finished goods के लिए. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? At the time of closing of business data, we have to consider that much of time or that amount of money is in work in progress. So a doubt will arise whether work in progress will consist of only of material or anything else. It is a very good doubt. Always work in progress contain material, some amount of material, some amount of labor, some amount of expenses. Generally we treat that material is rupees full, मतलब सोच लो 100% material is utilized, 50% labor is utilized, 50% expenses is utilized. समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहा हूँ? अच्छा जरूर ये वाला इधर देखते हैं एक मिनट. सोच लो मेरा एक फिनिश्ड गुड्स के लिए मटेरियल कितना चाहिए? 100 चाहिए. लेबर कितना चाहिए? सोच लो 50 रुपीस चाहिए. एक्सपेंसेस कितना चाहिए? 50. जब ये वर्क इन प्रोग्रेस कैलकुलेशन होगा, उस दिन में अगर वर्क इन प्रोग्रेस दे देता है, हमको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. अगर वर्क इन प्रोग्रेस नहीं दिया और बोल रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में कहीं भी कैलकुलेशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, आपको क्या करना पड़ेगा? टेकिंग 100 रुपीस ऑफ मटेरियल, 50% ऑफ लेबर, मतलब 100% ऑफ मटेरियल, 50% ऑफ लेबर, 50% ऑफ एक्सपेंसेस. दैट मींस work in progress contain full amount of material, 100% of material, 50% of labor, 50% of rupees 50 is 25. Again 50% of rupees 50 is again 25. So 150 rupees our WIP. समझ में आ रहा है? Is that clear? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? So any amount when work in progress should required in calculation, you have to do taking 100% of material, 50% of labor, 50% of expenses. Is that clear? अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं इधर कैलकुलेशन में. देखो क्या था मेरा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेज, एनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज, फिर था लेस क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर जोड़ दो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ दो, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, एड फैक्ट्री ओवरहेड, लेस स्क्रैप, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस वर्क कॉस्ट, ग्रॉस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. तीनों का नाम है, कोई भी बता दो चलेगा. अभी फिलहाल हमको क्या करना पड़ेगा? वर्क इन प्रोग्रेस को एडजस्ट करवाना पड़ेगा. कैसे करते हैं देखो, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP. WIP का मतलब क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP. ये प्लस करो, ये माइनस करो, नेट जो आएगा इनके साथ एडजस्ट करो, इनमें से जो नेट आएगा इसको हम क्या बोलेंगे? फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. फिर से बोल रहा हूं, when ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट और ग्रॉस वर्क कॉस्ट और ग्रॉस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट will be adjusted with opening stock of work in progress and closing stock of work in progress, it will show factory cost or works cost or manufacturing cost. Is that clear? Next we have to adjust add office and administration overhead. क्या आएगा इसको ऐड करने से? देखो मैं इधर क्यों बोल रहा हूं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, व्हेन द इंडिविजुअल आइटम इज देयर. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में बहुत सारा आइटम होता है, जैसे कि फैक्ट्री रेंट होता है,
फैक्ट्री लाइटिंग होता है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस होता है, फैक्ट्री फ्यूल होता है, इंश्योरेंस ऑन फैक्ट्री होता है, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री एसेट्स होता है। ये सब जो चीज है ना, ये सब चीज को इधर डालो फर्स्ट कॉलम में, फिर टोटल करवा के इधर डालो, इसीलिए मैंने डॉट दे दिया। इमेजिनरी फिगर। अभी जो आएगा इसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? When factory or works or manufacturing cost is adjusted with any office and administrative overhead is calculated or is known as cost of production। अभी फिलहाल हमको क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्लोजिंग एडजस्ट हो गया, ये हो गया ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एडजस्ट करवाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सो ऐड opening stock of finished goods less closing stock of finished goods, दोनों को एडजस्ट करने से जो आएगा हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। समझ में आ रहा है क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब फिलहाल हमको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एक ही एक्सपेंसेस रह गया, उसको क्या बोलते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ऐड करवा दो, क्या आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ऐड करो, कितना आ रहा है, ये जो आएगा, ये मेरा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हम कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद मुझे क्या एडजस्ट करना पड़ेगा, फाइनली इट वाज एडजस्टेड विथ प्रॉफिट एंड लॉस to get a sales price at or less। मतलब if there is a profit, profit must be added, if there is a loss, it must be deducted। add and loss, profit and loss जो आएगा इसका हम क्या बोलेंगे, सेल्स। समझ में आ रहा है? सेल्स के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो सेल्स आ गया, दिस सेल, सॉरी हाँ, दिस वन इज सेल्स, सो सेल्स विल बी टोटल सेल्स। If the question says that finding per unit sales or per unit cost, if question finding per unit cost, cost of sales must be divided by number of units। If question says that finding per unit sales cost or per unit selling price, then सेल्स ये हो गया, ले लो एक, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, ये ले लो बी। ये जो आएगा ए डिवाइडेड बाई बी, क्या करो अच्छे से देखो, ये वाला ए divided by B, total sales divided by number of unit per production। ये दोनों को डिवाइड करने से क्या आएगा, selling price per unit। समझ में आ रहा है? Is that clear? फिलहाल फटाफट एक बार डिस्कशन करते हैं। पहले क्या बोल रहे हैं, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP by opening stock of raw material, add purchase, add any direct expenses related to purchase, any direct expenses, जो भी direct expenses है, फिर less closing stock of raw material, क्या आएगा, raw material consumed, add direct labor, add direct expenses, क्या आएगा, prime cost में फैक्ट्री और ओवरहेड डाल दो, क्या करो, स्क्रैप माइनस कर दो,
जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट और ग्रॉस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तभी क्या करो, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्या आएगा, फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। उसके बाद क्या करो, एड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर क्या करो, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। एडजस्ट करने के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। हमेशा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसमें कंफ्यूजन कभी मत होना। व्हेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज एडजस्टेड विद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, देन इट इज कमिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तभी क्या करो, एड लेस प्रॉफिट एंड लॉस, क्या आ जाएगा, सेल्स। फिलहाल क्या करो, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के साथ डिवाइड करो, क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। फटाफट एक बार ओवरलुक करो, फिर हम 1 मिनट में आगे देखते हैं। आई थिंक ये चीज हो गया। हम लोग इसको देखते हैं थोड़ा। द मेन मोटो ऑफ दिस कॉस्ट शीट इज, हमको कॉस्ट शीट में पता चल गया कि हमको क्या क्या चीज लेना पड़ेगा। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, देखो तुम बोलोगे सर ये जो वाला था क्या, इधर क्या फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आइटम आएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में क्या क्या आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या आएगा, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, प्रॉपर्ली डिस्कशन करेंगे क्या क्या आता है। अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं दोस आइटम्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट शीट। मतलब ऐसा कुछ आइटम है जिसको हम कॉस्ट शीट में नहीं मतलब नहीं डालना पड़ेगा, अगर डाल दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। सो आइटम आर excluded from cost sheet. Generally there are 3 types of item are excluded from cost sheet. First point is pure financial item, Point number 2 is, first one is pure financial item. Point number 2 is apportionment of profits, और हम बोल सकते हैं appropriation of profits. Appropriation of profits. And point number 3 is any abnormal activity. ये क्या बोल रहा है कि हमारा कॉस्ट शीट में 3 चीज को ज्यादा नहीं देना चाहिए। And the 3 type of cost are pure financial item. Pure financial item में क्या क्या आएगा? One is pure financial expenses. Second one is pure financial income. आपको अभी क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, सर व्हाट डू यू मीन बाय प्योर फाइनेंशियल आइटम? लिख लो इधर प्योर फाइनेंशियल आइटम का डेफिनेशन, द आइटम्स व्हिच आर considering in financial account but not considering in cost account. ये बोल रहा है जो सब आइटम को हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंसीडर कर रहे हैं पर कॉस्ट अकाउंटिंग में कंसीडर नहीं कर रहे, ये आइटम को हमको क्या बोलना पड़ेगा? प्योर फाइनेंशियल आइटम बोलना पड़ेगा। सो द प्योर फाइनेंशियल आइटम में क्या क्या आएगा? एक्सपेंसेस आएगा, मतलब प्योर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आएगा, प्योर फाइनेंशियल इनकम आएगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगेन एनी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, आप लोगों को पता होगा आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वी हैव टू प्रिपेयर एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. That's appropriation of profit is segregation of profit into different manner. Like
any reserve, any transfer to reserve, any provision will be created, any amortization expenses will be created, any charity will be created. All these things should not coming under appropriation of, sorry, all these items are coming under appropriation of profit, but not considering under any cost. तुम बोलोगे सर प्रॉफिट को हमको तो इधर जो कंसीडर किया वो क्या प्रॉफिट था, हम जो ये प्रॉफिट कंसीडर करे इधर प्रॉफिट एंड लॉस, ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस क्या था, दिस इज द प्रॉफिट ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए सेलिंग प्राइस फिक्स करने के लिए, इसको हम क्या बोलेंगे प्रॉफिट. बट इन केस ऑफ appropriation of profit should not be considered because profit is already submerged in case of at the time of preparation of cost sheet. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ. So the three item जो हमको cost sheet में consider नहीं करवाना पड़ेगा, those three items are pure financial item, that is pure financial expenses and pure financial income. Financial item का मतलब क्या होता है रे? The item is considering on financial accounting, account नहीं है accounting. This one is accounting. The items which are considering in financial accounting but not considering in cost accounting. Is that clear? फिलहाल देखो कितना है apportionment of profits. Next one is any abnormal, likewise any abnormal income and any abnormal expenses or loss or gains. So it says that any abnormal income is there, it is not considering under cost sheet. Any abnormal gain is there, it is also not considering in this. Any abnormal expenses is also not considering. Any abnormal loss is also not considering in there. Next class में हम लोग क्या पढ़ेंगे? Any pure financial item में expenses में क्या क्या आता है? Pure financial income में क्या क्या आता है? Apportion of profit में क्या क्या आता है? Any abnormal income में क्या आता है, abnormal gain में क्या आता है, abnormal expenses में क्या आता है, abnormal loss में क्या आता है. So this matter will be discussed in next class. And next class we also discuss an important part. Those items are considering under factory overhead, and some items are considering under office and administrative overhead, and some are considering under selling and distribution overhead. We have to consider all these matters clearly. Okay? फटाफट एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम लोग खत्म करेंगे क्लास. फर्स्ट वन क्या कह रहे हैं? ओपनिंग स्टॉक को मेरे साथ आप लोग भी बोलते जाओ, फिर आप लोगों को पता चलेगा, याद आएगा. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड परचेज, ऐड एनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस. फिर से बोल रहा हूं, एनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज और कैरीज इनवर्ड. ये सब क्या आएगा? हमेशा एक गलती होता है, बच्चे लोग करते हैं, कैरीज इनवर्ड को फैक्ट्री ओवरहेड में डाल देते हैं. नहीं डरेगा, कैरीज इनवर्ड ऑलवेज एडेड विद परचेज कॉस्ट एंड बिफोर रॉ मटेरियल और प्राइम कॉस्ट. समझ में आ रहा है? तो लॉस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कर लो, क्या आ जाएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम, फिर डायरेक्ट लेबर को ऐड करो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करो, फिर क्या आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट, फिर क्या करो? फैक्ट्री ओवरहेड को डालो, और स्क्रैप है तो कुछ निकाल दो. निकालने से क्या आएगा? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस वर्क कॉस्ट, ग्रॉस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो भी हम लोग नाम बोल सकते हैं. फिर क्या करो? ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, दोनों को एडजस्ट करवा दो. क्या आएगा? फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. उसके बाद क्या करो? एड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड करो. क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एडजस्ट करो, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एडजस्ट करो. क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्या करो? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एडजस्ट करो. क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स. फिर उसके साथ क्या एडजस्ट करो? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्ट करो. क्या आएगा? सेल्स. अभी सेल्स को नंबर ऑफ यूनिट जितना प्रोडक्शन हुआ उसके साथ डिवाइड कर लो. क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस पर यूनिट. ये खत्म होने के बाद एकदम ये पूरा कॉस्ट शीट का चार्ज है. थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंट करो. देखो तुम तो ये वाला आंसर लिखोगे ही लिखोगे, पर एक्सप्रेशन बाय मतलब तुम्हारा जो रिप्रेजेंटेशन है थोड़ा अच्छे से करो, तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, नोट चेक करने के लिए मार्क भी अच्छा है. समझ में आ रहा है? तो फिलहाल ये थोड़ा ओवरलुक करके आओ, क्या क्या आइटम कंसीडर नहीं होता है, फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या कंसीडर होगा, ये सब आइटम हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे. ओके, थैंक यू.